Are we expecting more or? मुझे लगता है ऐसा नहीं लगता है। चालू भी रहना होगी अच्छा तो ऊपर से 9.8 हाँ 9.8 चालू है चलो let's hope that they will join आ गया बस ओके last one अच्छा तुम लोगों को कब बताया टाइम टेबल चेंज का ये टाइम टेबल चेंज था कल ओके मैं तो पढ़ा भी था बच्चा सुपर गुड फॉर अस ओके today we will study about Pascal's law Pascal's law right so this is also principle behind hydraulic engines so it's also called as principle of
hydraulic, and so, any idea what is Pascal's law? Those who have already covered at school. So, see, it's about transmission of pressure, okay? So, to understand it, now we know that pressure in liquid at different point is different, right? So, suppose there be liquid filled. Imagine there are three holes made here. 1, 2, and 3. Right? So liquid from here will fall close to the vessel. Whereas here it will fall little far away and this will fall quite far. Which means if we have P1, P2, P3. And I told you, now P3 is, the depth is highest. P3 is greater than P2, greater than P1. And this is obvious, right? So now if we do another experiment, right? So first let us write the law and then understand it. What is the law? Its statement is, it states that in a confined fluid, okay, pressure applied anywhere on it is transmitted equally at all points or undiminished equally at all points, right? And it is undiminished. Okay, so it is about transmission of applied pressure. Now see, imagine you have a flask like this, with a spherical bottom, and there is a water. There is a level till which the water is filled inside. Okay. And we have different openings here. Okay. Various types. So we have different openings in this. Okay. Then these are all pipes of same diameter. But they are coming out from different locations of the glass. Okay. In this flask, piston is fitted. So piston is a circular disc, and there is no gap between the boundary of the vessel and this piston. And there is a handle.
with the handle fitted, right? And now there is water everywhere. This is the initial situation. So water will be filled up everywhere, right? Because these tubes are also at the same level. So liquid follows its own level. You learned about it, right? Everywhere, the water level will be same in all the pipes. Right? Now what is done is a force is applied over here. Force in downward direction. So this will be thrust, and whatever is its area of the disc, that will be pressure. So this downward force will exert a pressure in the liquid here at this point. That pressure applied will be equal to force upon area. We are applying force that will exert pressure on the liquid. Now, once this happens, then what is observed is the new position of the piston will be, piston, let us say, comes down here. Okay, we'll press the liquid down. And then what we see is water will gush out. Right? And in all the tubes, the water comes out at the same height. When is that possible? It is possible when the pressure with which water is released from all the tubes is same. Because the mountain heights are same. Although the points from where the liquid is entering is different. So which means what? Whatever pressure P was applied here, the same pressure P is reaching everywhere. So this is the transmitted pressure, not the pressure of the water due to depth. So Pascal's law is about the transmission of pressure. Whatever is the applied pressure, same pressure reaches everywhere. But the liquid has to be confined. It is confined. Is it understood? Now this principle is used in building hydraulic machines. Okay. So first write this down. This was important. So what is Pascal's law statement? You have understood. So this is called piston. So this is a very familiar mechanical machine, a cylinder piston arrangement you'll come across in thermodynamics, many fields of study. Now I can draw a simple hydraulic machine also. Hydraulic is about fluid, okay? So it could be air or liquid, anything. So hydraulic, any machine that is using fluid as the transmission mechanism, right? That is what hydraulic machine. So let us say you have two cylinders.
One is thin and one is thick. And this is a connecting pipe between the cylinders. Right? And now you have two pistons. This is circular disc. Okay. And now you have liquid filled over there. Liquid is fluid, water or oil, anything. Okay. So its area is, let's say this is area A1, this is area A2. A2 is bigger than A1. This is a connecting pipe. Between cylinders. So these pistons, this is piston. Okay, so what is the area of cross section of piston 1? A1. This is A2. Now this A2 is greater than A1, right? Now, let's say I now apply some force over here. I'm calling that force as F1. Right? So I'm calling a force as F1. Now, because of that, there will be pressure experienced over here. What is this pressure? This pressure we are calling P1. Right? Or just P. Or P1. Yahan pe now this pressure is transmitted by Pascal's law, right? And it will apply pressure on this piston. Let's say we are calling that pressure as P2. Okay. So, and because of this pressure, that pressure will translate into force F2 in the upward direction. Whatever pressure is applied here, okay. So what is Pascal's law? By Pascal's law, P1 must be equal to P2. That's not the way. Right? So P1 must be equal to P2. But what is P1? P1 must be F1 upon A1. And P2 must be, so whatever is this P2, whatever force it is applying on this force also will be in the upward direction. Because of the pressure, the force is acting over here. But this force is due to the pressure. Okay, so this piston will start moving up because of that. This must be F2 upon A2. So this means how much is F2? A2 upon A1 times F1. But A2 is greater than F1. So let's say the A2 was 10 times the size, then F2 will be 10 times F1. So is that Rashida? Okay, so A2 is greater than
A1. This means F2 is greater than F1. If A2 is much greater than A1, then F2 will be much greater than F1. What does it mean? Like applying small force, I am generating a much larger force. So in this case, I can design. Suppose I apply 1 Newton and I want 100 Newton. So I'll have a thin cylinder and I can have a bigger cylinder. So my 1 Newton will be transferred as 100 Newton on the other side. So this is the principle of hydraulic rotation. So that's how. So now here I can make various applications. I can put a platform and I can make it lift a car or a truck. I can do that with a very little bit of. So you can see the operator just presses the pedal, foot pedal, and it just goes on. So this is called force multiplier. Joke मार रहे हैं. But this is what you force multiplier and work for the part confusing. एक मिनट अभी बता रहा हूँ. इसका मतलब तो ध्यान से नहीं सुन रहा. देखो हम लोग मशीन क्यों यूज करते हैं? अपना काम आसान करने के लिए ना. तो apply little bit of force and we should get many times of our effort. To magnify our effort, इसलिए मशीन यूज करते हैं, है ना? तो जैसे लीवर हम यूज कर लेते हैं ना, 100 kg का पत्थर है, तो उसको उठाने जाओगे तो नहीं उठा पाओगे डायरेक्टली. लेकिन अगर तुमको कोई रॉड दे दे, उसको कितना सपोर्ट लेके ऐसे धीरे से प्रेस करोगे पत्थर टूट जाएगा. देखता हूँ लेवल वाला चीज चल रहा है पे लीवर का वगैरह. लीवर से रिलेटेड है. थोड़ा सपोर्ट कर रहा हो तो सारी चीजें होता है. मतलब मशीन का यही काम है कि ह्यूमन एफर्ट कम एफर्ट में हम ज्यादा लोड ओवरकम करें. दैट इज द सो मशीन असिस्ट अस इन दैट वे, राइट? सो 10 बंदे जो काम करते हो एक ही बंदा कर लेगा विद द हेल्प ऑफ मशीन. समझ गए? तो देखो अभी हमने क्या किया है. देखो तुम्हें क्या समझ नहीं आया पहले बताओ. पास्कल्स लॉ समझ नहीं आया कि ये समझ? पास्कल्स लॉ क्या था वो बताओ. सेम प्रेशर ट्रांसमिट होता है, ये समझ आ गया? ठीक है. तो अभी हमने यहाँ पे प्रेशर जो लगाया है तो वही प्रेशर यहाँ पे भी मिलेगा. हर पॉइंट प्रेशर क्या लगता है? हर पॉइंट में लगता है. समझा ना? प्रेशर क्या लगता है? जो प्रेशर में यहाँ समझो 20 पॉइंट है और ये समझो 200 पॉइंट है. तो यहाँ जो 20 पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है वही प्रेशर यहाँ 200 पॉइंट पे लगेगा. हर पॉइंट में यहाँ तो हमने पी लगाया था ना, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे पी लगेगा ना. समझ आएगा? ये चीज समझ में. हाँ, तो ये पास्कल्स लॉ अच्छे से समझना जरूरी है. ये समझना. अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने इसको धीरे से धक्का दिया. ये तो छोटा सा पिस्टन है, उसको पुश कर सकते. हाँ ठीक है. तो हमने जो फोर्स लगाया वो समझो 10 ही पॉइंट था. इसका वेट कितना है कि 10 पॉइंट बनते हैं. तो वो 10 पॉइंट पे क्या प्रेशर लग रहा है? P1, क्योंकि ये लेवल सेम है ना. तो हर जगह P1 हर पॉइंट में लग. वो P1 यहाँ से आके गया. अब मैंने इसको नाम जस्ट P2 दे दिया बिकॉज सेकंड पिस्टन. मान लो ये पॉइंट पे प्रेशर P2 लग रहा है हर जगह, लेकिन पास्कल्स लॉ क्या बोलते हैं? प्रेशर सेम होना चाहिए. ठीक. अच्छा, प्रेशर सेम होना चाहिए. तो मान लो ये वाला जो प्रेशर है, प्रेशर क्या लगाएगा? अब थ्रस्ट लगाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? अब थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना? तो अब थ्रस्ट F2 लगा रहा है और एरिया हमको पता है कितना एरिया. ठीक है. तो अभी यहाँ का प्रेशर हमारा क्या है? F2/A2, क्योंकि प्रेशर तो सब सेम ही है ना हर जगह पे. तो लेकिन अब हमको एग्जैक्टली क्या पता है कि ये एरिया छोटा है और ये बड़ा है. ठीक है. तो हमको रिलेशन क्या मिला? F2 = A2/A1 into F1. प्रेशर इक्वल किया तो हमको फोर्स का रिलेशन मिला. F2 = A2/A1 into F1. अब हमारा एरिया तो बड़ा है ना, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, सब फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे. अभी जैसे एक यहाँ सामान पड़ा है, अकेला खींचने में तो बहुत ताकत लगेगी. 2 जन मिलके ताकत लगेगा, 3 जन मिलके इजीली आ जाएगा. मेरे को अभी वो फॉर्मूला समझ में आया. क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे फोर्स लगा है ना.
ठीक है, वो सारे फोर्स ऐड हो रहे हैं ना, पॉइंट बढ़ गया तो फोर्स के नंबर बढ़ गए, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई हो गया, मतलब फोर्स बढ़ गया, हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, समझो 10 न्यूटन लगाया, अब अगर ये एरिया 10 टाइम्स है तो 10 का 100 न्यूटन मिलेगा, 10 टाइम्स। हम एक आदमी का फोर्स लगा रहे हैं और वो 10 आदमी को लेके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमको एक मशीन बनाने आ गई जिसमें विच इज वर्किंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो फोर्स वाले जो भी एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, अभी हम आदमी को बोलो तो कार नहीं बना सकते, लेकिन अगर एक हाइड्रोलिक मशीन है तो अभी तुम जब सर्विस सेंटर पे जाते हो पापा के साथ, हाँ, या कोई भी मेंटेनेंस गैरेज पे जाते हो, तो अगर अच्छा गैरेज है तो उसके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकती है, जो काम यहाँ पे मैनुअली कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चालू किया, मोटर को पुश किया, तो ये मोटर उसको नीचे प्रेस करना चालू कर दी, मोटर क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, उसमें गियर रहेगा, यहाँ पे गियर रहेगा, जैसे कि ऐसा अरेंजमेंट अगर है, ठीक है। अब ये मोटर क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है ना, जैसे फैन हमारा रोटेट हो रहा है ना मोटर से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से, हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी से रोटेट हो रहा है। अभी हमारे पास गियर है, यहाँ पे गियर, जब हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो ये आगे की तरह अटक जाएगा इसके टूथ में। अब अगर ये ऐसे डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इसको अप एंड डाउन मोशन होने लगेगा, ये पिस्टन को अटैच है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं। सब लिफ्ट विफ्ट ऐसे ही चलता है बेटा, यही है, यही बनता है, ये चीज समझ आ गई तो जिंदगी सफल हो गई। तो हम क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं, बट नाउ वी आर यूजिंग मोटर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं, हम पैर से करते हैं। समझ में आई बात? तो ज्यादा सोफिस्टिकेशन करना है तो मोटर लगा दो, कुछ नहीं है, सारा खेल ट्रांसमिशन का है, इसलिए जो गियर होता है कार में उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, ऑटो ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक या मैनुअल, जो हाथ से लगाते हैं वो मैनुअल है, मैनुअल ट्रांसमिशन, और स्पीड रेस किया ऑटोमेटिक गियर बढ़ते जाते हैं, वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो इन मशीन एवरीथिंग इज अबाउट ट्रांसमिशन, एक जगह बैठ के तो कंट्रोल करोगे, उसका इफेक्ट कहीं और ट्रांसमिट होगा, तो कैसा ट्रांसमिट होता है वो ये अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग हो जाएगा, बेस्ड ऑन फिजिक्स, सिंपल सा लॉ है, उसके अलग अलग ठीक। तो ये हाइड्रोलिक मशीन का बेसिस समझ में आ गया। अब अलग अलग टाइप की हाइड्रोलिक मशीन वो मैं बताऊं, ये लिखना है तुम्हें, ये लिखना है तो लिख लो, ये वाला तो बहुत मल्टीपल। हाँ, हाइड्रोलिक में अभी देखो यहाँ पे हमने जैसे फ्लूइड यूज किया ना, हम यहाँ पे एयर भी यूज करते, तो जो एयर वाली रहती है, जो बाहर जो रोड होता है वो सब एयर कंप्रेशन होता है, ठीक है, और ये वाला जो है हाइड्रोलिक। तो जैसे कार में जो ब्रेक लगाते हैं उसके अंदर ब्रेक वायर डालते हैं ना, सुना है क्या, ब्रेक वायर डालते हैं या कुछ, है ना, तो यही है वो ब्रेक। अभी मैं ऐसा सब समझाऊंगा, इसका एप्लीकेशन समझाऊंगा, तो पहले हाइड्रोलिक मशीन तक लिख लो, जब उठने देख के मार्क करके समझ लो, देन वी विल गो फॉर learn 3-4 machines. So यहाँ पे I think we have understood that this machine acts as, therefore machine acts as force multiplier. And you can design your कि कितना फोर्स चाहिए हमको, 1 का 10 करना है, 1 का 20 करना है ना, उतना एरिया बढ़ा दो पहले पिस्टन। इसको गियर बोलते हैं, तुमने देखा होगा, ठीक है, दिस कॉल्ड गियर। जैसे माइक्रोस्कोप यूज किया क्या तुमने लैब में अभी तक, तो उसमें स्क्रू करते हो तो वो ऊपर नीचे जाता है, वो बेसिकली करता है स्क्रू एक जगह पे फिक्स है, लेकिन जो उसका जो मैकेनिज्म है, लेंस मैकेनिज्म, वो सिलेंडर में फिट है, जब तो स्क्रू रोटेट करते हो वो सिलेंडर आगे पीछे,
बिकॉज ये टूथ उसमें जाके फिक्स हो जाता है। तुम्हारे साइकिल में एफर्ट कहाँ लगाते हो, पेडल पे करते हो ना, वहाँ एक गियर है, वो ट्रांसमिट होता है रियर व्हील में तो वो चेन, तो वहां पे मैकेनिकल ट्रांसमिशन, यहाँ पे हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन है। तुमने पैडल में जो एफर्ट लगाया वो पीछे की व्हील पे चेन से पहुंचा, देयर आर वेरियस वेज ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज अ मैकेनिकल ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो तुमने एफर्ट लगाया वो कैसे पहुंचा, हाइड्रोलिक से, लिक्विड से, फिर हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन। तो कैसे टाइप का ट्रांसमिशन है उससे मशीन का नाम डिसाइड होगा। दोनों ऑफ मैकेनिकल रहेगा, क्योंकि लिफ्ट का मोटर चलती है, मोटर चलती तो पुली रहता है ना, पुली से पूरा क्या होता है, वायर्स आते हैं जो लिफ्ट को, और ये लटका हुआ है। लिफ्ट कैसा रहेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड है, लिफ्ट ऐसे चल रहा है। अब ये जाके कहीं मोटर में लगा हुआ है, ठीक है। तो जो लिफ्ट में जो कंट्रोल पैनल है, जब तुम 1 2 3 4 5 6 है, इसके अंदर पूरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो यहाँ पे जब तुम प्रेस करते हो तो मोटर को मालूम है कि उसको कितना टाइम तक चलना है। टाइम से रोलिंग से हाइट कन्वर्टेड है, टाइम इज कन्वर्टेड इनटू रोटेशन ऑफ द मोटर। एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करना है, वो सारी कैलकुलेशन स्टोर्ड रहती है नंबर, वही उसका लॉजिक है, वो पूरा इंजीनियरिंग है। बट वो क्या है, कितनी देर चलना है, और उसका मोशन क्या, खाली अप डाउन मोशन। तो ये ट्रांसमिशन है। अभी देखो मोटर रोटेट हो रही है, इसने अपना रोटेशन ट्रांसमिट किया गियर को, गियर से फिर पुली रोटेट हो गई है ना, पुली रोटेट हो गई। अब ये लिफ्ट ये कनेक्टेड है, अब ये जो वायर है इस पे ट्विस्ट होते जाता है, ट्विस्ट होते जाता है, मतलब क्या हो जाता है, रैप होते जाता है, नॉट ट्विस्ट। फिर वो वाइंड और अनवाइंड, ऐसा हो, दो तरीके से, वाइंड होगा तो ऊपर जाएगी, अनवाइंड होगा तो नीचे आएगी। इंजीनियरिंग में दिस इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस, कि कैसे we know the principle, but how to make different devices, that is engineering. Engineering will find application, and science may be actually discover the principles. So both are shared, right? Engineering is part of technology, this is part of basic science. So जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट, okay, shall we go ahead? Yes. So examples of hydraulic machines. Okay. So basically you have hydraulic press, then you have hydraulic jack or lift, jack or lift. Then you have hydraulic brakes. Braking system होता है जो vehicles में, that is called hydraulic press. So the principle that we just learned, okay, I'll explain you in the diagrams. Okay, so this is the diagram of hydraulic. So this is 4.7 on page 87. Okay. So this is called hydraulic press or Brahma press also. Its given name is Brahma press. So what is happening? Now where is the hydraulic machine? See, these are the two pistons, the thin one and the thick. Look here. You look in my diagram. This is the thicker one and this is the thinner one. Okay. Now what is the connecting pipe? This is the connecting pipe. Right? Now this piston can be handled with the help of this
lever or handle over here. So what is happening is here you also have a reservoir, fluid reservoir, right? And here is a wall. Look here, one wall here and one wall here. Wall का function क्या होता है? It allows the flow of fluid only one direction. So when the fluid can flow from the tank into the piston, when you lift the handle up. So when you lift it up, then what will happen? It will suck liquid inside. Right? When you press it down, then this lid will close, the valve will close. So it will only allow liquid to come up from the reservoir. Okay, now when you press the handle, then the liquid will come out from the connecting pipe R and it will enter the other cylinder. Here also there is a valve. That valve is a weight. So when this liquid is entering, it will raise the valve and the liquid enters in the cylinder, right? And it cannot go back because if the liquid tries to come out, this valve will close down. Okay, so now what happens? Now you know the hydraulic machine, the force is being applied on a smaller area, and here the area of the piston is much bigger. So much bigger force is applied over here. Now, if you fix the roof of it, so this is like with the cylinder itself, you have made a cage, and there is a fixed roof. So anything which you keep here, that will get pressed. Because this cylinder is rising, no? When you are pressing here the handle down, this cylinder will go up. So anything kept here will be squeezed or pressed. So this is the function of hydraulic press. So what is kept here is cotton bale. So if you keep cotton bale, you can make thin sheets of it and then roll it and send it to market. Or you can have books. Before binding, you can press it. So it can be used to press books also. Or it can be used to mark, engrave, what do you call, monograms, right? On metal, the alphabets are engraved, right? So with these kind of press, you can do that. Okay, or you can put seeds here, squeeze the seeds to extract oil out of it. So any pressing application can be used in this container. Just to design the container. If it is you're pressing the seed, then have a pipe and keep a container here, all the oil will get deposited over. Got it? And so once you press the handle, all this fluid is now accumulated here, right? So here, if you want to use it again, this cylinder has to go down. So for that, you have a release valve. You open the release valve, all the water comes down, and then the cylinder goes down. And when you press it down, all the fluid here was anyway entered this cylinder. Then repeat the process. Got it? This is it. So either you can do it mechanically or you can do electrically. क्या नहीं समझा फिर से समझ गया ना समझ आ गया ना तो ये अभी वही चीज है अब इसमें चेंजेस का थोड़े चेंजेस किए so that we can use it repeatedly है ना क्योंकि इसमें ये तो समझ में आ गया था प्रिंसिपल लेकिन ये बार-बार कैसे यूज करेंगे तो बार-बार करने के लिए हमको क्लोज सर्किट चाहिए ये ओपन है वन डायरेक्शन ठीक है ये क्या हो गया मींस गाड़ी ऊपर तो चलेगी नीचे कैसे आएगी तो रिलीज हो तो ये इंजीनियरिंग है कि कैसे सोचे उसको फिर से कैसे बार-बार यूज करें समझ आ गया ओके सो नाउ वर्किंग भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इफ यू नाउ रीड यू विल अंडरस्टैंड these are the 4 applications of hydraulic press पढ़ लो 4 applications of hydraulic press हाँ अशिता है क्या अशिता Yes, sir. so these are the 4 applications of hydraulic press when did you join before Pascal's law or after Pascal's law Before, sir. अच्छा ठीक है फिर तो okay so next I'll explain is hydraulic jack it is also called lift same thing so this is absolutely same like hydraulic machine so here you just have attached the lever when you press it down so here is a valve right
It is coming up. So you have to find some way to basically release this ball. So ये फिर से पीछे आ जाए. Okay, same thing here. But now the application is you're lifting weight. There is no fixed route. There's no fixed route. Okay, so it can go as high as you want. So then you can do that by choosing the height of the cylinder and height of this arm of the piston. This is piston arm. Okay, and this is the piston. Understood? Then you have hydraulic brake. So in hydraulic machine, what have we discovered? You need 2 cylinder and 2 piston, and then control their movement. That is how you will make a machine. The difference will be how you are controlling the movement of the piston and what are you doing with it at the end of it. Okay. Now, so here for a hydraulic brake, right? Again, there are 2 cylinder piston system. This is one, and this is the other one. On the smaller piston, you have a brake pedal fixed. Okay, so brake is fixed over here. So when you press the brake, it pushes the piston inside from right to left. Okay, and see, then there is a connecting pipe. This connecting pipe, okay, which has a fluid, this acts as a transmitter of this pressure. Now the other cylinder is different than this. Now it has got 2 pistons. This cylinder is, the piston can move in both the directions, right? So, and how that piston is, where is that piston resting? It is resting on the brake shoe of the wheel. So each wheel has this arrangement. So there is a, inside the rim, there is a piston sitting, right? You must have seen inside there is small, so that piston is resting on the brake shoe. Okay, so when you apply the pedal, this piston applies pressure in this direction, and that pressure reaches here, and it spreads the piston outward. And when it presses outward, the brake shoes are pressed against the rim, and then the motion is retarded. Okay, so this is shown only for one wheel. So this transmission, this connecting pipe, it is connected to all the 4 wheels. हाँ? एक नहीं ऐसा और 3 होगा, तो वो तीनों के अंदर मतलब प्रेशर तो हर जगह सेम ज्यादा है, सेम ही प्रेशर लगेगा, तो all the wheel will be retarded with same pressure और same force. ऐसा नहीं कि आगे वाला एक ज्यादा रुक रहा है और दूसरा वाला नहीं, तो कार थोड़ी टर्न हो जाएगी. All wheel will have same pressure. Got it? अगर difference आया तो straight motion नहीं मिलेगा, टर्न हो जाएगी. Understood? So Pascal's law है, so many good applications. अच्छा, अभी ब्रेक रिलीज करोगे तो क्या होगा? तो ये ब्रेक शू में क्या लगा है? स्प्रिंग लगा. That spring will again press it. ये piston अंदर दब जाएगा and ये ब्रेक रिलीज होगा. Clear? So this is like on the spring action. Because of spring, once you lift the brake, release the brake, everything goes back to normal condition. So again, you will accelerate. Okay, is it understood? This is it, right? So with this, we are through with the first part of this chapter. Right? Now I'll start the second part, and then we'll take numericals together for ANG, right? After we connect it. So next is atmospheric pressure and its measurement. Now I had already explained in the last class what is atmospheric pressure, right? So read the blue box. What is atmospheric pressure? What is atmospheric pressure? It is the thrust exerted by atmospheric air column, right? So what is the atmosphere? This is roughly about 300 kilometers. I had explained this, right? So if you are checking out atmospheric pressure over here, this is the air column, right?
So whatever thrust it is exerting here, that is the atmospheric pressure. So at normal temperature and pressure at sea level, I had told you what is the atmospheric pressure? It's called 1 atm, which is equal to how much? 1.031 into 10 raised to 5 Pascal. This is the atmospheric pressure. Okay. So if this is the atmospheric pressure, right, and this is quite a lot, then how are we able to function? Why we are not squeezed or crushed? We should be like squeezed. So inside us, the blood is flowing everywhere, right? And heart is pumping blood. So the blood pressure inside our body is counterbalancing the atmospheric pressure. So just imagine what powerful machine it is. नहीं blood flow करना नहीं, अगर blood का pressure, जैसे तुम hills पे जाते हो, hills पे, so as you go up, what happens? The air column reduces. अभी इतना ही column बच गया. यहाँ पे कितना था? Full height. So you don't have pressure because of this much air it's below you, and air close to the ground or earth is more denser than the air above. So suddenly as you go up, the pressure rises drastically. There's no linear decrease. So initially it decreases fast because the density changes rapidly close to the surface of it. But as you go up, then it, like, once it has already become very low, now the air is so much far apart. Now there is not much change, but still the pressure over here is much smaller than pressure near the surface of it. It's maximum near the surface of it at sea level. Okay. So then what happens? Then your blood pressure has whatever pressure it has, because heart is doing the same job. Then the blood pressure increases, and therefore it comes out. नाक से खून निकलता है, आँख से निकलता है, कान से निकलता है. Some people experience it also when they are flying in aeroplane, right? Because as you go up, the pressure, so the pressure drops. But then inside aeroplane, they artificially maintain the pressure so that it resembles the conditions on the ground. Okay. Otherwise, they are also. But some people are very sensitive, so they start experiencing all this. Clear? So this is how it is. So is it understood what is atmospheric pressure and how to measure? I had already explained you. You can measure it through a barometer, right? Simple barometer. Measurement of atmospheric pressure. Right. So one is simple barometer, which is devised by Torricelli. Torricelli. Okay. So Torricelli, L है कि क्या है? Torricelli. Yeah, stop. I है. Probably. Some measurement of atmosphere. Yes, Torricelli validates. Yeah, Torricelli. क्या बोल रहे हैं? Simple Measurement of atmosphere. atmospheric pressure. मैंने बोला मैं एक साथ वर्ड बोलता हूँ तो वैसा होता है atmospheric pressure. ठीक है? इतना समझदार. Simple barometer by Torricelli. Yeah, but I had explained this already. Okay. So as per this, when the mercury filled in the tube is inverted in a trough filled with mercury, then you see a height of
from the free surface in the trough, it is 76 centimeter thin. This mercury column stands. So the argument given was the pressure inside the tube must be equal to pressure outside. So outside pressure is atmospheric pressure, and inside pressure is, because this column is nothing but vacuum, right? It's almost like vacuum. Because this is not air. This thing was earlier fed by mercury. So at most there could be some mercury vapors, but that will not create any pressure. So whatever is the pressure is only due to this liquid column of this mercury column. Okay, and that we calculated. Coming how much is with the H rho G formula, right? All right. So now, and you know how the pressure affects, right? Pressure is thrust upon area. So thrust is because of the weight of the mercury column and whatever is. So if the area increases, then the pressure will decrease. So many question comes on this also. Factors affecting pressure. What are the factors affecting pressure? So there are two formulas, H rho G. With the height, with the density, okay, and the change of gravity. Gravity generally is given constant of that. Or either in this way or in this way, right? So like if the question comes, when a person walks on a sea beach, right? He basically yields the surface, like he enters inside the surface. But when he sleeps, he does not. Why? So when he sleeps, the surface area increases. Weight is same. Thrust is same, right? But now the area is increased. But when he is standing, again, weight is same, but now area is decreased. That's how the pressure increases. So the force exerted by the feet on the ground is more. Okay. This is, I mean, not force, pressure. Force to say any. Okay, pressure. Understood? That is also the answer, like when you are wearing shoes of flat sole versus, you know, thin high heels and all. So there the pressure will be much more. There the pressure will be less. Clear? So those kind of questions you should be able to answer now. All pressure factors that affect pressure has to be answered using these two formulas. Okay. So one is simple barometer. There is another barometer which is called 14th barometer. What is this spelling? Barometer. And here aneroid barometer. Aneroid barometer. 14. Yes. The feeding is So these two are not in the syllabus. Okay. Okay, only this is there. So this we have already learned. Book में दिया हुआ है, but सिर्फ simple barometer पढ़ लो. That is more than. Okay. So we will not be covering this, right? Is it covered in your school? So these two are not there. जरूरत भी नहीं है, ये ठीक है. पहले फिलहाल ये सीख लिया. वो क्या थोड़ा ज़्यादा sophisticated है. Concept इससे ही समझ में आता है. ठीक है. दूसरा हमने क्या बताया? If you tilt this tube, right, like this, the level will be same. The level remains same, right? Which level? The vertical level. So you will see that the mercury level is maintained, right? Whatever angle you tilt the tube with, level remains same only. Whatever free surface you apply. अगर ये द्वारा ड्रॉप है, तो मर्क्यूरी का जो हाइट है यहाँ से that height remains same everywhere. Understood? This height remains constant. Okay, so tilting doesn't affect the vertical height. Vertical height. The length of the mercury has increased now. Okay, but the vertical height is what is important because thrust depends on perpendicular force. Understood? So this is what it is.
Then we'll discuss what is the advantages of using mercury as a barometer liquid. There are many advantages. First of all, its density is very high. So density high होने से क्या होता है? The height is within 1 meter, right? So suppose instead of mercury, if I was using water, so which height, which length of water column will give you the same atmospheric pressure? समझो torrentially में mercury की बजाय water use किया हो. So that will be like 10.4 meter. 10.4 meter. What is 76 centimeters? Okay, yeah. So you will require a very long tube. It will become so inconvenient because water density is 13.6 times less. So that calculation shows. So that is one advantage of using mercury as a barometer liquid. Okay. So with water, a much longer tube will be required. So you can see this. The first, what are the advantages of using mercury as a barometer? So it will be convenient if you use mercury instead of water. Second is, I told you here the vapor pressure, mercury vapor pressure in this space, mercury vapor pressure is negligible. Okay, but if you use a water column, then here it will be water vapor. The water vapor pressure is much higher. So this barometric height will not show you the accurate pressure. Okay, so the pressure, the column will not show the accurate pressure because water vapor pressure is high. So that's the second point, right? Third point, mercury neither wets or sticks to the glass tube. It is clear. Water chipak jata hai. So sometimes to find out the correct level, it may be difficult. Plus it is transparent also. Whereas mercury is shiny. So very clearly you will be able to mark the level or measure the level. So there is no ambiguity when you are using mercury. So there are many advantages of using mercury as a barometric liquid. Okay. And likewise, so we already discussed the disadvantages. So that is listed separately. Okay, of water. So disadvantages of using water, right? Now demerits of simple barometer also need not be done. It's okay, like it is made up of a glass tube, things like that. Plus it is difficult to attach a scale and all, right? So if the pressure increases or decreases, higher the height means more pressure, right? Lower the height means less pressure. But you can't attach a scale, no, because this, when the height decreases, more mercury will be spilled in the drum. So if you attach the scale, that zero will be merged into it. So those are few things, but this is not required. Disadvantages of simple barometer. Only advantage of mercury as a barometer liquid, as well as disadvantage of water. Okay. Next is variation of atmospheric pressure with altitude. That is what we have to understand. Okay, which I briefly told you here. So what is the variation of atmospheric pressure with altitude? Can I erase it? You have volume now. Next class we'll do some derivatives. Yeah, next class we got Variation of atmospheric pressure with altitude. Altitude means height. Okay, so basically what happens is, like as you go up, so as you go up, so with rise of height, right, the air density reduces.
reduces. As the altitude increases, the density decreases. And what is the formula for pressure? H rho G. Okay. Now this H is depth. You understand? So you measure this H from here. I told you, right? So as height increases, when the height increases and depth of air column also reduces. What is it? In the formula H also reduces. This is H. Depth. Clear? So both density and depth of the air column reduce. That's how the pressure will reduce. But how is the variation plastic? This is not linear. Right? Let us say on the y-axis we have pressure. And this is now this is height. So height is measured from earth surface, ground up. And so how is height measured? From ground up. So, and you know, maximum pressure is atmospheric pressure. And this is in centimeter, right? In centimeter of Hg column. Let us say this was 25, 50, 75. So let's say there is 76 over here, right? So as the height increases, the graph becomes like this. So it's not a straight line, it's not a linear decrease. First it decreases drastically. Now it decreases slowly. So for height of, let's see here. So 0, 6, 12, 18. 0, 6, 12, 18. 24, 30, 36. 24, 30, 36. So if you go from 0 to 6 kilometer, this is kilometer, right? Kilometers above sea level. This is in kilometer. So if you go 6 kilometers, so from 75 it is coming like very close to from 75 to 25. A drop of 50 units, right? In terms of column of the mercury, 76 से सीधे 25 के आसपास आ, मतलब बुक में थोड़ा 30 के आसपास दिखा रहा है, right? Now, so this will be 30 only, right? Because this is 25 to 30. But from 6 to 12, what is the difference? Very little. So here it was like, so now the decrease in pressure is not that much. So it's not linear. Understood? The reason I'll explain in the next class. See you after this, right? The last is itself. You are asking about maths. Why do we No, that's what I'm saying. Seriously, not shit of it. So again, तेरे को ये सारे सुनता है, तेरे को ये तो नहीं है। ये बाकी, हाँ, देखिए जी क्वेश्चन है, बाकी, ये तो कितना बोला है? अरे कितना किसी कर मेरे दोस्त सामने ही आया। 400 लोग नहीं है।
8.2 8.3. Started. We have about 8.2 back. One to the level. Both things. One. But it's not that the take is coming in. Second. पर एक जन को डालते हैं कभी भी वो काम करते हैं इसको डालना पड़ेगा वो उसको काम भी कर सकेंगे। वो डालते नहीं कर रहे इधर नहीं इसको आज सुबह मेरी मैट हुआ था इसके लिए क्या क्या है वो नहीं कर रहा है सुनो सर बोलते दो बार हो गया मैं उसके बाद जब उसको देखा तो उसके साथ क्या हो रहा था मेरी कर गई अभी तो और आने हैं मतलब उनको तो पता ही नहीं लगा उनका कुछ 4 बजे आ जाएंगे हाँ उनको नहीं पता है बिल्कुल नहीं पता है देखते ही क्या है वो नहीं शायद स्पंदन को पता होगा नाम तो पता नहीं पता नहीं हम से शिकायत को साथ ना पेश करा समझ में आता है या फिर मतलब अपना फोन साइलेंट पे जब होता तो क्या टिक करके कंटेंट स्मैश करते हैं मुझे दोस्त ने इसका मैसेज आ रहा है कि ना मेरा भी तो बहुत इम्पोर्टेंट था नहीं अरे मुझे भी इसका वो सब कुछ ही भेजता है तो बहुत जमा देता है सबको आता है मुझे वीडियो नहीं किया है मुझे थोड़ा कैसे 5-10 मिनट का ब्रेक है इसका आराम से हाँ मेरे को सिर्फ आधा घंटा लगा अरे क्या अरे टीवी सुनते ना मेरी वजह से फिर क्या हुआ ना मैंने फिर मैं 8.1 करो तेरे को कहा तू सीधा सीधा छाप रहा है क्या मैं करती हूँ अच्छा पहले कि तो हम टेस्ट में वो तो काम करेंगे अपनी फैमिली नहीं 10 मिनट ब्रेक में पूरा खत्म करना है समझता से विचार सर कुछ देखते हैं कुछ टेस्ट करते हैं क्या करते हैं वो नहीं देखते सर मेरा क्वेश्चन अगर कोई आदमी सोचो उस नॉर्मल हमारे ग्राउंड लेवल प्रेशर लेवल से सोचो हमेशा से ऊपर आता है तो फिर अगर वो उसको लाया गया लाइक आफ्टर मैनी इयर्स तो फिर उसके साथ क्या होगा मतलब सोच भी हाँ ये मैं आंसर दे दूं जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं ना वो नीचे आएंगे थोड़ी गर्मी लगेगी उनको कंडीशन लेकिन जो हम लोग जो है जो सी लेवल पे हैं वी हैव टू गो टू पहाड़ when we'll feel breathless अच्छा तो हम our lungs will have to really work hard to suck in air but those who are already living in the hilly region so they are used to of that their lungs are strong anyways got it because the outside air pressure is less so for the air to go in their lung has to work hard people who are living in Maharashtra but those who are living in hilly region they are used to of it so that's why like there are people who go for
rock climbing or mountaineering expedition. Okay, so they are kept in base camps or conditioning camp. So for 4-5 days, etc. Right. So once their body, it's called acclimatization. Acclimatization. So once you get used to of breathing in that condition, then you are set for. So high to low is not an issue. Low to high. So where were we? We now was atmospheric pressure. So you can see here it's beautifully summarized in this blue box, right? So the decrease is not linear. Especially the density of air does not reduce linearly. The column reduces linearly, the depth, but not the density. So therefore, the combined effect is the drop in the pressure is like initially it drops suddenly, then it stabilizes. The density of the entire atmosphere space में अलग रहेगा ना? Space में तो air है ही, space में space है. Absence of air is space. Absence of atmosphere is space. इसलिए तो उसको space बोलते हैं, empty. Air हमारे पास ही है. इसलिए तो हम तुम हैं भाई. अर्थ के बाद कहीं कुछ नहीं है, कहीं एटमॉस्फेयर ही नहीं है. अब समझा. Good. So, हाँ? तुम्हें अभी तो पानी पियो. सुबह 6:30 बजे क्या करने के लिए? खेलने के लिए. बहुत लेट के आना चाहिए ना घर पे. मुझे लगा सर 4 बजे की ट्यूशन आ रहा था, सोच रहा हूँ घर से अच्छा, तो पानी पी भाई. क्या थोड़ा इसलिए वो नहीं रहा. पानी पी, थोड़ा उठक बैठक मार 2-4. So what is the change in atmospheric pressure? यहाँ पे एक example दिया हुआ है. Like mountain Everest का height कितना है? Roughly 8 kilometers, right? So at that level, the change, the atmosphere is 30% of what it is at sea level. 1/3 हो गया, 1/3. It is a lot difference. मतलब जो हमको 3 times effort करना पड़ेगा माउंट एवरेस्ट के टॉप पे, तो जब हम ऐसे सांस ले रहे हैं आराम से, आपको फील भी नहीं हो रहा है, तो हमारी सांस कैसे चलेगी? अभी हम सांस ले रहे हैं एफर्टलेसली हो रहा है ना, वहां हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा 3 times कम से कम. ठीक है, तो 10 बार सांस लोगे तो सांस लेने में ही थक जाओगे, फिर तुम्हें चक्कर आएगा. समझ आई बात? ये सब पंगे हैं. तो ये तुमको 2 दिन 48 hours से लेके किसी को 48 hours का हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इम्यूनिटी एक्सेट्रा. बिल्ड, सबका बिल्ड कैसा है इंटरनल, उस पर डिपेंड करेगा. बिल्ड एज ए नॉट फिजिकल स्ट्रक्चर. पतला आदमी भी बहुत आराम से रह सकता है, या मोटा भी बहुत आराम से रह सकता है. इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट फिजिकल, इट्स इंटरनल इक्विलिब्रियम. Okay. So now, so what are the consequences? You read, there are 2 consequences given. At high altitude, since the atmospheric pressure is less, breathing becomes difficult. And nose bleeding may occur due to excess pressure of blood over the atmospheric pressure. I explained it also, right? And second is at high altitude, the fountain pen leaks. Right? Why? Because when you fill the ink in a fountain pen, anybody use fountain pen? So you press it. This is how you fill the ink. You dip the nib in the ink, press it, and then it sucks the ink. So there is some air into it. It doesn't fill it completely. Some air is already there. Now when you take the fountain pen at height, then what happens? The air pressure is already there, which is at 1 atm. The air in the pen was filled at 1 atm on the ground, but when you go up, the outside air pressure is less. Therefore, the air pressure inside the pen will press the ink out. तो अगर हम उसी प्रेशर में वो करें तो कुछ
तो उसी प्रेशर में कैसे तुमने ink तो यहाँ भरी ली, आपने भाई मतलब उसी प्रेशर में मतलब खाली पेन लेके जाओ और वहां फिल करो तो फिर तो अगर ऊपर से फिर किया और नीचे लाए तो भी लिखो। नहीं, तब तो बाहर का ही प्रेशर जाता है, तो बाहर का ही प्रेशर है। ओके, नाउ another thing is weather forecast by use of barometer, ठीक है। अब barometer को हम यूज कर सकते हैं weather forecast में भी, and we can use it, तो barometer के दो एप्लीकेशन है। barometer can be used to first forecast weather, मौसम कैसा होगा। Second, it can also be used as LT meter, मतलब height meter, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, अभी बैरोमीटर में प्रेशर कैसे पता चलता है, बैरोमेट्रिक हाइट से, वो जो हाइट है ना 76 सेंटीमीटर, इट इज कॉल्ड बैरोमेट्रिक हाइट। अभी सपोज दैट हाइट सडनली रिड्यूसेस, जरा केस क्या है, सडन रिड्यूस, sudden fall in barometric height. What does it signify? Sudden fall in barometric height. What does it indicate? That pressure has reduced, atmospheric pressure has reduced. Column छोटा हो गया मतलब atmospheric pressure reduce हो गया. Then what do you expect? That means we can expect lot of air coming in our region. So you can expect a storm or cyclone. Whenever there is a sudden drop in barometric level, your weather forecasting stations में mounted है अलग-अलग जगह पे, so they will predict a cyclone. अभी आजकल अपने को मालूम पड़ जाता है, 2 दिन में like sea or coastal area में fishermen are warned, don't go for fishing inside, right? Because they are expecting a cyclone, right? So this is how we can predict it. So first one is, if the barometric height at a place suddenly falls, it means that the pressure at that place has suddenly decreased, which indicates coming of a storm or cyclone. Okay. Next, what if it gradually falls? Well, it's going to be a big time. So it is falling means what is happening? So it is linked with air density, right? It is linked with air density. So when can it fall? When it is falling, that means humidity or the water vapor might be increasing. So suppose there is dry air, okay? So dry air, when there is dry air, so dry air में क्या होगा? Oxygen, nitrogen, ये सब का ही combination होता है, ठीक है? Moist air में क्या हो जाएगा? H2 water vapor आ जाएगा उसमें, है ना? So which is more heavy, air or water vapor? What is water vapor? Water is heavy. So let's see. So what is the atomic weight of hydrogen? 1, right? So 2, and what is atomic weight of oxygen? 16. So 2, so H2O का weight क्या होगा? एक atom का plus 16. How much is this? 18, right? अब सिर्फ ऑक्सीजन ले लो, समझो ऑक्सीजन इसका कितना होता है 2 into 16 कितना हुआ, यही है फिजिक्स, जो हमको लगता है ऐसा नहीं होता। तो एयर का मास ज्यादा तो डेंसिटी भी एयर की ज्यादा होगी। सो नाउ यू आर सेइंग देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन एयर डेंसिटी। वो कैसे हो सकता है? इफ द ह्यूमिडिटी इज राइजिंग, सो इट इज रिप्लेसिंग एयर मॉलिक्यूल विद water vapors. So that means what can you expect? Okay, you can expect rain, right? Because humidity is increasing. वो जब humid हो जाता है तो rain होती है शाम को। मतलब in this region we can witness all these things. If you go in deep land तो वहाँ पे humidity का उतना चक्कर नहीं होता, but coastal areas में होता है। That is why कभी भी rain होती है कुछ भी होता है।
ठीक है, या फिर फॉरेस्ट एरिया में भी होता है, बिकॉज कंडेंसेशन वहां पे भी जल्दी होता है, ठीक है ना। फॉरेस्ट या कोस्टल एरिया में वी कैन एक्सपेक्ट अनटाइमली रेन्स. So देखो, if the barometric height gradually falls, it indicates that moisture is increasing. Moisture is presence of water vapors in atmosphere. That is, there is a possibility of rain round the clock. Third, if the gradual increase is barometric height, then it means moisture in the air is reducing. So you can expect a dry weather. ठीक है, so air dry होता है तो इससे भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. So you can expect coming of a dry weather, है ना. So expect hot weather. Dry means hot, right? If now there is a sudden rise in the barometer, then what? Extremely dry. Rise हो मतलब पूरे का पूरा dry air हो गया, air heavy air, only air, no moisture. ठीक है, so extremely dry weather. Okay. And if there is no abrupt change in the level, then similar weather conditions, then जो भी moderate है, ठीक है. If there is no abrupt change in the barometric, right, it indicates that the atmospheric pressure is normal. Weather will remain unchanged. जो भी weather है, वैसे ही रहेगा. ठीक है. So this is the application of barometric height to predict weather conditions. Second is altimeter. Now होता क्या है देखो. In the plane, right? So when the plane is flying at some height, so at what height the plane is flying? This can be figured out. So there is an altimeter, something is fixed outside, and the screen of it can be seen inside. Okay, so it is at outside. जो भी उसका barometric height है, right? So as it goes up, the atmospheric pressure reduces. So there is some drum kind of arrangement. You can see this aneroid barometer. So there is a spring kind of arrangement. Right? So can you see this diagram? This is like a spring action. So it will move up and down, and there are tools here. Okay, gear. That's why I actually drew it purposely so that you'll understand it easily. And there is a gear system, and there is a pointer fixed, right? And a dial is so this pointer, so this if it rotates anti-clockwise, right? That means this is going down. It will go down when the pressure increases because it is then pressing. If the pressure reduces, it will go up. Okay. So if it goes up, then this will. So this can go by the left or right. So here you have this kind of display. So when you go up, right? So the calibration here is in terms of height. Okay. So when you go up, what will happen? This will go up. That means it will turn here. So on the left side, if the pointer goes left, that means altitude is rising, and it is given here. How many, either in feet or meter. So bigger number will be here. So let's say this is like meter 1, 2, 3, 4, dot, then 1000. Okay, like that. Okay, understood. So this thing can move up and down. I'm sure your school teacher might not have explained this. टीचरों को भी नहीं समझ आता. The problem is the language. हमारी फैमिली इंजीनियर. अरे वो इंजीनियर तो कोई भी बन जाता है भाई. 50%, 60% मार्क्स लेके बहुत सारे इंजीनियर घूम रहे मार्केट में, लेकिन वो इंजीनियर नाम के सब तो जो भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं पास तो सब होते हैं, लेकिन who leaves his impact और कब तो होते हैं. अरे बगैर पता पासिंग परसेंटेज तो 33% है यार. ये टॉपिक स्किप कर दिया उससे, इंजीनियर तो फिर भी बन गया. डिग्री डजंट मेक एन इंजीनियर, योर नॉलेज डज.
इंजीनियर बनने के बाद फिर क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, कहीं पे नौकरी भी कर लेगा, तनख्वाह आती रहेगी, घर बार संसार बच्चे, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। वो जानते हैं कौन लोग है कि हाँ ये इंजीनियर है बॉस, या ये टीचर है, या ये, और ये रिपीटेशन बहुत कम। टीचर भी तो ऐसे ही बहुत सारे टीचर है इंटरेस्ट से पढ़ाने वाला टीचर, वो जब क्लास में आता है तब उसका मूड अच्छा हो जाए, ऐसे टीचर देखने। स्कूल के टीचर जो होते हैं क्लास में आने के बाद उनका मूड अच्छा हो जाए और बहुत एनर्जेटिक हो जाए, अच्छा टीचर है क्या, चेक करो सारे टीचर जो स्कूल में सब रोज हमारे क्लास होता है। पूरे स्कूल में कोई एक दो टीचर ऐसा मिलेगा तुमको जो जब बच्चों से मिलता है तब उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, तो तुम्हें उसके साथ करना टाइम स्पेंड, तो ये ऑलवेज करेक्ट है। पर वो तो बच्चों में टीचर ज्यादा एक्सपर्ट है। प्रॉब्लम टीचर का नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम का है, वो सिस्टम का प्रॉब्लम। यहाँ पे जो सिस्टम है इट बेसिकली like encourages meritocracy, like private setup जो होता है ना, तो it encourages that. So कुछ स्कूल होते हैं, कुछ स्कूल का बड़ा नाम होता है तो they encourage the right thing. वैसे जनता स्कूल तो बहुत है, school is not a flashy good nice building, no, that's that thing. I mean this means nothing, they don't talk to you, right? Just a lesson. जो ऑपरेशन में डेली जो बात करते हैं, जो ऑपरेशन है उसका that is मैन टू मैन, वहाँ पे कौन लोग हैं वो इज हैंडलिंग। हमारे स्कूल में कभी कुछ भी हो सकता है, इधर का इधर हो सकता है, इधर का इधर हो सकता है, कुछ भी। यार 90% देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, तुम्हारा स्कूल नहीं, 95% चीजें तुमको वैसे ही मिलेंगी हर 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 जगह पे। एक्सीलेंस बहुत लिमिटेड होती है एंड दैट इज योर इनर क्वालिटी, हाउ मच यू वांट टू एक्सेल। सिस्टम तुमको सब गधे ही मिलेंगे सब जगह पे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी गधे बन जाओ, दैट डिपेंड्स ऑन यू। You can choose not to be a donkey. You understand? That's your बुद्धि तुम्हारी अपनी है, उसको कैसे यूज करना है, that's totally it depends on you. समझा? क्योंकि सब लोग उसमें से ही निकलते हैं ना, यही सिस्टम है ना, यहीं से कोई एक पायलट भी बनता है, कोई इंजीनियर भी बनता है, फिर कोई एक IIT में जाता है, यही से होता है, इसी सिस्टम में, वो किसी सिस्टम। तो वो क्या करता है, तो दो तरह के लोग, एक सिस्टम की वीकनेस पे फोकस होकर उसी में उलझ के रह जाएंगे, दूसरा अपना रास्ता होना है। तुम सोचोगे कि हाँ यार ये सब है ठीक है, अब व्हाट कैन आई डू सो दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। Circumstances are same for everybody. Like if I'm teaching in the class, there are 20 students, all will not excel, but they were given the same thing. So what's the difference? It's your individual effort, that's it. So it's always you, not the system. वो अप्रोच तुम ठीक करो बस। हमारे स्कूल में ऐसा है, दूसरे स्कूल में उससे बहुत बेहतर नहीं है, तुम कैसे हो ये मैटर करो, स्कूल कैसा भी हो समझ आएगा। इसलिए स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। So with this we are done with the chapter. Now let's do numericals. ठीक है, now वॉल्यूम है, दे दो, have you got the volume? So there are classwork and homework I don't think, right? There are so many questions, so I'll take this. Classwork level. This is on page 62. And you'll also find it in your book. So open the page in your book. So let's say this is the page. The first one of the same, right? Hammer one of the same, and area of base, fourth one of the head. One, four, the pressure of water of ground floor is 40,000. So 6, 1, 4, 6. And take that. Video of this 10. Make it section, chalo, yellow. So I'm doing the first one.
So numerical 1, classwork numerical 1. Page number क्या volume का? 62. Page 62. Beautiful. So we will take turn in solving. Start with you. Hammer exerts a force of 1.5 Newton on each of the two nails A and B. The area of cross section of tip of nail A is 2 millimeters square, while the nail B is 6 millimeters square. Calculate pressure on each nail in Pascal. Pressure पूछना कोई एक नंबर है ठीक है ये कितना है 6 millimeters square ठीक है so what is the pressure on nail A so you have two nails let's say this is nail इसका A का जो ये area है ये 2 millimeters square और nail B का कितना है ये 6 millimeters ये तुम्हारा nail हैमर दोनों पे सेम थ्रस्ट लगा 1.5 व्हाट इज TA देखो प्रेशर A will be 1.5 divided by 2 millimeter is how much millimeter to meter is 10 raised to minus 6 हो जाएगा ना हाँ 2 millimeter right 10 raised to minus 6 meters ये हो जाएगा 2 into sorry 6 into 10 raised to minus तो ये न्यूटन है ऐसा यूनिट है तो इसको भी एसआई में करना पड़ेगा ना मिलीमीटर टू मीटर कितना हो गया ये तो दिस विल बी हाउ मच 15 by 20 so 3 by 4 into 10 raised to 6 so ये कितना हो जाएगा बताओ it is 3 into 25 10 raised to 4 375 into 10 raised to 4 this will be 7.5 into 10 raised to 5 fast is it the answer तो हाँ हाँ देखो 75 into 10 raised to 5 Pascal आ रहा है 75 to 10 raised to 5 Pascal. 75 into 10 raised to 5 है क्या हाँ कहाँ गलत हो गया था वो मेरी 6 okay 3 by 4 is 0.75 right into 3 by 4 is how much 0.75 3 4 it's 1.75 to एक मिनट this is 15 upon 20 into 10 raised to 6 ठीक अच्छा ये 20 हाँ ये 10 raised to 7.5 into 10 raised to 6 so एक इसमें 0 है 75 correct okay this is fast likewise do the second you understood ना 15 by 20 एक 0 कट होके ये 5 हो जाएगा इसका 0 कट गया तो 10 raised to 5 हो गया तो वापस छोड़ दिया है ना सर तो वो छोड़ दिया है ना तो बुक में रॉन्ग है फिर बुक में हाँ एडवांस क्या बात कर रहे हैं 7.5 into 10 raised to 5 आंसर है 75 बोल रहे हैं यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम में हाँ वही तो बोल रहा हूँ कैसे करना वॉल्यूम में करेक्ट करो हाँ वॉल्यूम में हाँ that this is correct so my answer was correct
आकाश में थे। पहले भी हाँ मैं वही सोच रहा हूँ बुक में करेक्ट है 7.52 करेक्ट दी आंसर इन द हाँ वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम में मिस्टेक्स हैं कहीं कहीं। मैं वही सोच रहा हूँ मैथमेटिक्स कैसे गड़बड़ हो गई यार। अगर सेम सब है तो बुक में भी हाँ चलो पीवी निकालो देखो इसका भी गलत दिया है क्या। गलत नहीं होना चाहिए कितना होता है इसका हाँ इसका सीधी है 1.5 6 into 10 raised to -6 ये कितना हो गया 15 by 60 into 10 raised to 6 ये हो गया 15 by 15 by 6 into 10 raised to 5 अब ये कितना हो गया 6 to the 12.5 6 5 the 12 right into 10 raised to 2.5 into 10 raised to 5 है क्या हाँ ये ठीक है फाइन चलो नेक्स्ट read the next question यहाँ से क्यों कॉपी कर रहा है खुद से यूज ठीक है हाँ कर लेना वो टाइम खुद से क्या टाइम कम लगता है कॉपी करने में टाइम ज्यादा लगता है कर लो फिर बताओ नेक्स्ट शुरू करें नेक्स्ट अवेलेबल इज So while solving numericals, if possible, make diagrams. Then it helps you solve it easy. So what are the tricks? First, convert the given data into SI units, and then solve it. Follow. The area of base of the cylindrical vessel is 300 centimeters square. Water density 1000 kilogram meter per cube is poured into it up to a depth of 6 centimeter. Calculate the pressure, the thrust of water on the base. Gravity is 10 meters. Erase it now. Try it. कैसे करेंगे हम लोग? Scenario क्या है? You have a cylindrical vessel. ऐसा. Okay. सर हमको प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना है ये पहले विजुअलाइज तो करो एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज ये इसका जो एरिया वो कितना है 300 सेंटीमीटर ठीक है और क्या दिया है वाटर डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1000 kg per meter cube ये दिया है where water is poured up to a depth of 6 centimeter. मतलब when the water is poured here, वो 6 सेंटीमीटर फ्री सरफेस हाँ ये 6 centimeter यहाँ से so what is it? It is H. प्रेशर का सर वो 6 सेंटीमीटर ऊपर से है ना डेप्थ बोल रहा है हाइट है डेप्थ किसका भाई वाटर का ना हाँ सर पर वो बोल रहा है कि अप टू अ डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर ऊपर का 6 सेंटीमीटर अप टू द डेप्थ वाटर फिल करोगे तो क्या यहीं ये इधर एयर रहेगा क्या सर नहीं सर वो लोग नीचे में वो जितना है वो है पर ऊपर से वो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर डेप्थ बोल रहा है ना डेप्थ कहाँ से होता है फ्री सरफेस ऑफ वाटर कहाँ है इधर है ना व्हाट सो डेप्थ का डेफिनेशन क्या है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर नॉट द डेप्थ ऑफ द वेसल डेप्थ ऑफ द वेसल कुड बी 20 सेंटीमीटर डेप्थ किसका है प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है वाटर की वजह से हो रहा है ना वाटर का डेप्थ इट इज मेजर्ड फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर ठीक है दैट इसमें कंफ्यूजन क्या होता है
we use the symbol H, which is for height generally, but here it is depth in pressure formula. Wahi confusion hai. So you have to know how you are measuring. So when the same thing when you are measuring from bottom up, it is called height. When you are measuring it from top to bottom, then we call it depth. So what is the reference? That you should be clear. Okay. Now what we have to put? So this is the given situation, right? Now convert it. Centimeter to meter will be 10 raised to minus 4, right? So that 3 meters. Meter square है ये meter नहीं है. So you convert the unit. So कैसे convert करते हैं पता है देखो अभी सेंटीमीटर कितना हो गया 1 centimeter is देखो ऐसे convert करते हैं हमारा हमेशा mistake नाम हो जाता है. Suppose you have centimeter square. What is 1 centimeter? 1 centimeter is 10 raised to minus 2 meter. That is square. Centimeter is square. Actually, it is centimeter square. So ऐसा लिखा मतलब centimeter square नहीं, centimeter square. ये कितना हो गया? Take the power in 10 raised to minus 4 meters. That's all. ये हुआ सेकंड. मतलब 1 meter millimeter square है. ठीक है? ये कितना हो गया millimeter? 10 raised to minus 3 meter का square है. इसलिए ये हुआ 2 3 6. Unit conversion, be very careful. So where this power comes, the whole thing. Okay. With practice, you can write directly. So height is how many meters? 0.6. 0.006 meter because it is into 10 raised to minus 2 divided by 100. So this is 0.06. So unit convert हो गया. अब क्या है हमारा formula? So first you have to find out pressure, right? So first is pressure. E is equal to H rho G. H कितना दिया है? 0.06. Density of water कितना दिया है? 1000. Gravity कितना लेना है? Question में दिया है. Gravity is 10 meter per second. तो ये भी ले लो like given G is equal to 10 meter per second. So into 10. So 40. So this will be like 600 Pascal. ठीक है? 600 Pascal. Second क्या निकालना है अपने को? Thrust of water on the base. Thrust from the base, right? So देखो P is also is equal to thrust upon area. So this means F is equal to E into A. अब हमने P निकाल लिया है previous part में. P was 600. What is area? 300 into it is given 10 raised to minus 4. So how much is this? ये दोनों 0 और 10 का पावर पड़ जाएगा. 18 न्यूटन आएगा. So yeah. 10 minus raised to minus 4 है और 600 और 300 का मतलब 18 into 10 raised to 4 आएगा. 4 minus 4 कितना हो गया? नहीं समझा? जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया वो सिंगल. ये कितना आएगा? 18 के बाद में 4 0 into 10 raised to 18 into 10 raised to 4. ये क्या सब हो गया? 18 चार्ज into 10 into 10 raised to minus 4 ना? ये हो गया 18. ठीक है चलो your turn. You will read the third question. Any doubt? The pressure of water on the ground floor is 40,000 Pascal and on the first floor is 10,000. Find the height of the first floor. So now numerical 3.
What is given? What is given? Pressure on the ground floor is 40,000 pounds. So let's say this is the ground floor. This is all. And which is the upper floor? The first floor is 10,000 pounds. This is how it is. Figure it out. And Yes. for example, you taught in that first lecture. Did I do that? So can you solve it then? So density is 1,000. Pressure of the water on the ground floor is, let's say we call this as P1 is equal to how much? 40,000. 40,000 Pascal. P2 Pascal, right? So because the pressure obviously at the higher floor will be less, right? Because this column, that column is less for the higher floors. So it will be maximum at 1. So what is the height of the first floor? So let's say this is H2, right? And this is H1. Okay, so what is the height of the first floor? H. So H is equal to H1 minus H2. This is what you have to find out. Okay. So this is equation 1. But P1 is equal to H1 rho G, right? And P2 is equal to H2 rho G. Okay, so what is H1? So H1, H2 is given. Density of the water is given to you. So density of the water is Ng is given, right? So what is given? So direct question. 40% Pascal of density are found in gravity. एक second. हो जाएगा ठीक है. So how much is this? This is equal to H1 कितना आ गया? H1 कितना है? H1 दिए नहीं. H1 This is H1 density G. ये ठीक है. इसको ऐसे कर सकते हैं ना. So therefore P2 minus P1 is कौन सा बड़ा P1. Therefore P1 minus P2 is equal to how much? H1 minus H2 into rho G, correct? Yes. So but what is H1 minus H2 is H, which is the height, है ना? Therefore H is equal to क्या हो जाएगा? P1 minus P2 divided by rho G. All good. This data we have. Substitute कर रहे हैं. बस. So this is 40,000. यहाँ तक आ गया. Density कितना था? 1,000. ये भी 10 है क्या? हो गया. So this is 30,000. so 3 है. This 3. ठीक है. So what is this? H. H is the height of the first floor. Height of first floor. Is this? First floor. So I generally make diagrams and do then I connect with the numerical, understand it fully, concept clear हो जाए. ठीक है. So is it one student asked me, sir, is it necessary to draw the diagram?
No, it's not necessary. But for me, it works. So it's up to you. If you don't want to draw, don't draw. Yeah. हाँ, अपने खुद के लिए. But it is not necessary. ये कहाँ से आ रहा है पानी ना? ये वाटर टैंक. Water. यहाँ पे वाटर टैंक कहाँ? बोलेगा H1 H2 क्या? वाटर टैंक. और क्या है? Next. It's Next is Nevan. Next is Ashita. Ashita, are you with us? Ashita. Ashita गायब हो गई. ठीक है, Nevan, you continue. At sea level, the atmospheric pressure is 1.04 into 10 raised to 5 Pascal, assuming gravity equals to 10 meters per second square, and density of air to be uniform equal to 1.3 kilometer per cube. So this question, Find the height of the atmosphere. Meter. I what is it? I think it's not in the textbook. क्या नहीं समझ आया? Question. Question of the height future. You want to put atmospheric pressure to that? So at sea level, the atmospheric pressure is 1.0. ये तुम्हारा sea level है, ठीक है? हाँ. तो तुमको क्या दिया है? P is given as 1.04 into 10 raised to 5 Pascal. ये दिया होगा, ठीक है? तो उसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है. डेंसिटी ऑफ एयर और क्या दिया हुआ है? Gravity. ग्रेविटी कितना दिया हुआ है? 10 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. density of डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया हुआ है? 1.3 kg पर मीटर क्यूब. तो इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन. अब तुम्हें निकालना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द एयर कॉलम, राइट? तो ये हाइट हो गया. So since P is equal to H rho G, H निकालना है. H is equal to P by rho G. P कितना है? 1.04 into 10 raised to 5. Rho कितना दिया हुआ है? 1.3. So ये निकाल दो. देखो कितना आता है? 13 के टेबल में 104 आता है क्या? 8 times. 13 के टेबल में 104. हाँ. 1040 आता है ना? हाँ. 13 into 100. इसका 100 नीचे है, इसका वो to 10 raised to 5. 8 times हो गया. So और एक कट करेंगे.
This is what? 8 into 10 raised 8 into 10 raised to 4 हो जाएगा. meter. 80,000 आ रहा है क्या? So 8,000. So we get Sir, certainly. sir, अच्छा और एक 10 है ना. हाँ, 1.3 को आपने multiply करना है आपको 100 और एक 10 चाहिए. ये वाला 10 है. ठीक है. This will be ठीक है. Correct. See, what I did was I took 100 down for 0.4. I multiplied 10 for 1 point. और ये 10 लिखना भूल गए. इसके लेवल से. Okay, is it clear? That's what it is. वन पॉइंट जीरो था ना. हाँ, उसका 100 नीचे आ गया. 1.3 था, इसका 10 ऊपर आ गया. और ये 10. ठीक है. नेक्स्ट. The areas of the pistons in a hydraulic machine are 5 centimeter square and 625 centimeter square. What force on the smaller piston will support a load of 1,050 Newton on a larger piston? State any assumption which to make your calculation. Other than no function and no leakage. चलो ये तुम लोग करो. बाकी के बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? सर उनकी अभी एग्जाम हमारे भी एग्जाम खत्म हो सकेगी तो हमको छुट्टी चाहिए. मतलब अभी हम लोग का एग्जाम खत्म हुआ था ना वेडनेसडे को, तो कल से वो नहीं आ रहे हैं, ब्रेक है. तो उनको सर ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. 11th में कुछ भी मिस नहीं कर रहा है. देख लो फिर खुद से करने में बहुत टाइम लगेगा. 11 बोल रहा हूँ. 9 7 करके बोल रहा हूँ ना, तो वो 11 दिमाग में आ रहा है. 9 और 11 ये दो टॉप होते हैं. ये बहुत सी नई नई चीज फिर 9 अगर ऐसे दिया तो 10 इजी हो जाता है. 11 ऐसे दिया तो 12. तो बातचीत बंद करो, उस पर फोकस करो. सॉल्व करके दिखाओ तुम लोग. हमारे पास 10 मिनट है. दो अलग अलग क्वेश्चन है. A1 A2 दिया हुआ है. ये वाला तो बिल्कुल और F1 भी दिया हुआ है. F2 क्या हो जाएगा? F2 is equal to A2 by A1 into F1. ये फॉर्मूला यूज करो. अपना नाम क्या बताया था? अर्णव. कौन से स्कूल से? वादो वर्षों में पढ़ा था 4 साल पहले. इंटीग्रेटेड बैच.
That was 2017 के आसपास. Because 4-5 years. ना? आगे आंसर. मैंने A1 620 कर दिया, A2 5 वैसा मत करो. मतलब F2 हमने बड़ा वाला पूछ लिया था. हाँ ठीक है, चलेगा. स्मॉलर क्वेश्चन मतलब इससे स्मॉल एरिया है. A1 छोटा होना चाहिए, A2 बड़ा होना चाहिए. उल्टा करिए. स्मॉलर क्वेश्चन को छोटा एरिया और उसका पोज भी छोटा होगा. आंसर करेक्ट ही आएगा, लेकिन तुमको समझने में दिक्कत होगी. इसका डायग्राम बनाना चाहिए. एक छोटा सिलेंडर, एक बड़ा सिलेंडर, एक कनेक्टिंग पाइप. आगे. अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट में क्या, which assumption, state any assumptions which you make in your calculation. तो ये कब पॉसिबल है, when the liquid is confined, there should not be any leakage. लीकेज नहीं होना चाहिए. मतलब तुम दबा रहे हो, लिक्विड कहीं से निकल गई, वो नहीं होना चाहिए. तब पूरे का पूरा प्रेशर ट्रांसफर करें. दूसरा, फ्रिक्शन भी जितना कम हो उतना अच्छा है. तो क्या हो जाएगा? हाँ? नहीं, मतलब ट्रांसमिशन ये होगा क्योंकि सम एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट. क्योंकि तुम जो फोर्स दे रहे हो, दैट इज नॉट फुल्ली ट्रांसफर्ड. इट विल बी यूज्ड इन हीटिंग द स्टफ. फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. ऐसा पॉसिबल नहीं है. फ्रिक्शन थोड़ा तो हो गया. हाँ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जितना कम होगा, मशीन की एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी, आउटपुट उतना अच्छा. नेक्स्ट किसका टर्न है? करना. Force of 50 kg F is applied to the smaller piston on a hydraulic machine and lifting friction. Find the force exerted on the large piston. The diameters of the pistons being 5 cm and 25 cm respectively. डायमीटर से तुम रेडियस निकालोगे, रेडियस से एरिया. एरिया को पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. पाई आर स्क्वायर करना, पाई कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो लास्ट कैलकुलेशन देखो, मैं कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करता हूं. ठीक है, ऐसा करो. एक सेकेंड. ये न्यूमेरिकल तो तुम्हें समझ आ गया ना. ये चीज मैंने नहीं समझाई ना. ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब नहीं होता है. हमें फटाफट ये बता देता हूँ. न्यूमेरिकल तो तुम लोग कर लोगे. ठीक है. देखो, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये कोलैप्सिंग टिन कैन. अभी क्या किया है, हमारे पास एक कैन है. ठीक है, इसमें खाली थोड़ा सा पानी भरा हुआ. अभी क्या किया उसको, अभी इसको गर्म किया पानी को. ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो गया पूरे का पूरा वेपर में. कौन सा? स्टीम. जब वो पूरा स्टीम बन गया था, तो अभी से एयर नहीं है बिल्कुल भी. पहले जो एयर था वो सब बाहर निकल गया. होल कैन इज फुल ऑफ स्टीम. फिर हमने ढक्कन बंद कर दिया. अब ढक्कन बंद करने के बाद इसमें क्या है, सिर्फ स्टीम है. अब ऊपर से पानी स्प्रिंकल किया, तो इसका जो एयर था वो कंडेंस होकर फिर से वाटर बन गया. तो ये वाटर तो बन गया, लेकिन एयर नहीं. यानी पहले जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उसके अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम था. अंदर बॉटल ने बैलेंस कर दिया. अब अंदर एटमॉस्फेयर है ही नहीं कुछ, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डील करने के लिए.
क्रश हो जाएगा। यानी अगर हमारा ब्लड प्रेशर नहीं हो तो हम भी ऐसे ही क्रश हो जाएंगे। समझ आई बात? ये है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। सेकंड, अब देखो दूसरा क्या है, अभी जूस कैसे पीते हैं, द सेकंड कॉन्सिक्वेंस लुक हियर। अब ये जूस पीने के लिए हमने हॉलो पाइप डाला, स्ट्रॉ, है ना। अभी स्ट्रॉ के अंदर, स्ट्रॉ में से जूस अपने आप डालो तो अपने आप बाहर नहीं आता है। अब हम क्या करते हैं, सक करते हैं। तो क्या सक करते हैं, स्ट्रॉ के अंदर जो एयर था वो हमने सक कर ली थी। तो शुरू में सक करने में हमको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे हमने एयर सक कर लिया, वो एयर कहाँ चली गई, हमारे लंग्स में। ठीक, अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो है ही, वो इसको दबाएगा। एक बार फ्लो शुरू हो गया फिर वो बहुत इजीली आ रहा है। समझ आया? तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर एक्ट कर रहा है और फिर ये बराबर आ रहा है, क्योंकि इस स्ट्रॉ में अब कहीं पे भी एयर नहीं है, पूरा लिक्विड पे है, तो इजीली अंदर सक हो जाएगा। सेम प्रिंसिपल पे इंजेक्शन भी काम करता है। ठीक है, ये जो प्लंजर है इसका पिस्टन को प्लंजर, तो इंजेक्शन में आप कैसे, जो इंजेक्शन है इसको फिल करते हैं, पहले हम इसको पूरी एयर निकाल देते हैं, है ना। तो प्लंजर और इंजेक्शन के बीच में बैरल, ये जो है इसको बैरल बोलते हैं, बैरल और प्लंजर के बीच में कुछ एयर निकले, सीधे वो कहाँ चला गया, इससे कभी भी सुई लगाने से पहले उसको हम पूरा स्क्वीज करके उसके अंदर का हवा निकालते हैं, फिर उसको डिप किया, उसने सक किया, तो सक करने में इजीली अंदर आएगा, क्योंकि अब एयर जब इसके अंदर है ही नहीं। Now this atmospheric pressure will help the syringe when you're pulling the plunger backward, it will be easily filled in the injection. एक बार sucking start हो गया फिर बहुत easily होता है, थोड़ा सा initial effort ज्यादा, क्यों effort कम हो जाता है, because of outside atmospheric pressure, it aids the sucking of the injection. Okay? तो सब जगह सेम ही है, वैसे एक्शन ऑफ रबर सक, और रबर सक तुमने किचन में मम्मी यूज करती हो, जैसा टाइल के ऊपर चिपका दिया, तो होता क्या है, ये जो सिलिकॉन का जो आता है ना, व्हेन यू प्रेस इट अगेंस्ट द वॉल, तो इसके अंदर का जो एयर है, पहले क्या होता है, वो कर्व्ड होता है ना, कर्व्ड होता है तो उसमें एयर है, कप कप शेप में रहता है। अब हम क्या करते हैं, उसको प्रेस किया तो उसका एयर खत्म हो गया, अब तो बाहर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बाहर से लगा के, अंदर तो एयर है, इसलिए कभी स्मूथ टाइल पे चिपके गए, मतलब उसमें लीकेज होकर एयर अंदर नहीं आना चाहिए, लीकेज होकर एयर अंदर जाएगा उसमें से बाहर आएगा, ये वैक्यूम बन जाता है। एक बार हमने उसको ऐसे जोर से जो ऐसा दबाया तो अंदर एयर है ही, ठीक है ना, तो ये चिपक जाएगा। दैट्स व्हाट हैपेंस। वैसे ही साइफन एक्शन में क्या होता है, हाई लेवल पे अगर कोई कंटेनर है और लो लेवल पे हमको उसमें से ऐसे निकालना है, क्या करेंगे, पाइप डाल देंगे, पाइप में एयर है अभी फ्लो नहीं निकल होगा, लेकिन अब हम इसको एयर सक करके निकाल देंगे तो इसमें कोई एयर नहीं है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको इसमें अंदर डाल के पूरे का पूरा इसको एम्प्टी कर देंगे। दिस काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड साइफन, लेवल डिफरेंस होने से होता है। ठीक, सिमिलरली टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम अ सीड ऑयल कैन, अब ये देखो लास्ट वाला कैसे है, अगर तुम्हारे पास कोई केन है पूरा एयर टाइट है, हाँ पूरा सील्ड है, अब तुम उसमें एक छेद करोगे एक साइड में और उसको ऐसे मारेंगे तो निकलेगा, क्योंकि अंदर तो एयर है नहीं, ये पूरा सील्ड एयर क्या है, एक ही छेद करके इसको ऐसे करो तो एयर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि वो जो एयर कॉलम बाहर आने की कोशिश कर रहा है उसका प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। अभी कैन के अंदर क्या है, लिक्विड जो भरा है, लिक्विड कॉलम का प्रेशर जो है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम, तो हम क्या करेंगे, एक छेद जो किया था उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे और एक छेद कर देंगे, आप जब उसको टिल्ट करेंगे यहाँ से एयर अंदर घुसेगी और दूसरी तरफ से ये स्मूथली आ जाएगा, इसी दो छेद, ठीक है, दैट्स इट। मैं एक्सप्लेन करने वाला यही रह गया था, बाकी वी आर डन विद प्रेशर। हाँ ओके, सो इसके थोड़े से यूनिट बी के जो डिवाइडर है ना, नेक्स्ट क्लास में वो कर लेंगे, देन आई विल स्टार्ट विद अपर, ओके।
So wish you a very happy and safe Diwali. Take care of yourselves. Huh? Happy. Let's go. Which is not big. That's another 8.2. 8.1. That is to say, the question of my now vision. That is such happening in the vision. Time was I don't know who lives in